isn't it? Now let us try to go for the next one is acceleration. Acceleration of SHM. Acceleration of SHM. Acceleration कैसे लिखते हैं बेटा अपन काइनेमेटिक्स में A is equals to dv divided by dt. Velocity as a function of time अपने पास क्या है देखो velocity as a function of time क्या है v is equals to a omega into cos omega t. तो वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ. So this is your d into your v is equals to a omega into your cos of your omega t divided by dt कर दो. तो इसमें a omega बाहर निकाल लीजिए. So this will be equal to a omega is out. Now this is the differentiation of your cos of your omega t divided by dt. The differentiation of cos क्या होता है बेटा किसी को आइडिया है? Differentiation of your cos will be equal to how much? So इसमें से ये ओमेगा बाहर आ जाएगा. Differentiation of cos is minus sin. तो ये होगा minus a omega into फिर ये omega into your sin of your omega t ये हो जाएगा. So यानी this value will be equal to minus of your a omega square into sin omega into t. That means I can write this one as minus of omega square into a into sin of your omega t. If you see carefully, a into sin omega t क्या होता है बेटा? देखो equation starting में लिखा था मैंने y is equal to a into sin omega t is nothing but equal to y. तो y लिख सकता हूँ मैं इसको. यानी acceleration will be equal to minus of your omega square into y. So this is the acceleration of your SHM. So acceleration of an SHM कितना आ गया? A is equals to minus of your omega square into y. फिर से एक बार देख लीजिए. Acceleration is nothing but what? Rate of change of velocity. Anything divided by time is known as of what? Velocity. So velocity as a function of time क्या होता है बेटा? A omega cos omega t. इसमें से A omega बाहर निकाल लीजिए and differentiate your cos. Differentiating cos with respect to omega t. So differentiation of cos omega t is minus sign. ये omega बाहर निकाल लीजिए. So it is यहाँ पर omega और ये minus आ जाएगा. तो ये into your minus ये हो गया minus ये omega square into sin. तो कितना बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. ये साइन ओमेगा टी कैन बी टेकन एज ऑफ योर वाई. तो एक्सेलरेशन बन गया मेरे पास माइनस ऑफ योर ओमेगा स्क्वायर इंटू योर वाई. क्लियर है? सो दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट बेटा? वाई. सो आई कैन से दिस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ योर वाई. यानी जैसे जैसे वाई की वैल्यू चेंज होगी एक्सेलरेशन वैसे वैसा चेंज होते चली जाएगी. ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया. तो कैन आई से दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So this is the condition for SHM. This is the condition for SHM. ठीक है ना? Is that clear? तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो बेटा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अंदर ले लो तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0. लिख सकता हूँ. एक्सेलरेशन कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू योर टी स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई योर डी टी स्क्वायर divided by dt square plus omega square into y will be equal to 0. So this will be the equation of your SHM. So this is the differential form of your SHM. Differential form of equation of SHM. Done better. आ गया. Right on point here, beta. Uniform circular motion
Uniform circular motion is the superposition of two perpendicular SHMs, y component or x component. ठीक है ना? So what I can say here right now, uniform circular motion is the superposition of your two perpendicular SHMs. ऐसा देखो, यहाँ पे जब हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे बेसिकली, तो इसके पास एक कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट था वर्टिकल. सो इट मे बी अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन. हमने बोला था यहाँ पर एसएचएम कैन बी अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन. ठीक है ना? यहाँ पर देखो, every oscillatory motion must be periodic, but all periodic motion need not be an oscillatory. If the displacement of the particle on oscillatory motion is expressed in terms of sine and cosine function, then the motion is said to be a harmonic. अगर परपेंडिकुलर में साइन और कॉस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस फंक्शन. डन बेटा? आगे एक्सेलरेशन सभी को. चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, characteristics of SHM. Characteristics of SHM. Okay, first one देख लीजिए. Displacement इसका जो होता है ना, we always measure it from the mean position बेटा. Displacement of particle in SHM is always measured from mean position. Is always measured from your mean position. Displacement कहाँ से measure करेंगे बेटा? You always measure it from the mean position. याद रखना for doing the numericals part evaluation. और maximum displacement of a particle in SHM क्या बोलते हैं बेटा? याद है किसी को? Maximum displacement of particle in SHM is called amplitude. और ये वेक्टर होता है बेटा, इसको वेक्टर लेके करते हैं. y max will be equal to your E. Y max will be equal to your E. ठीक है ना? So maximum displacement of the particle in SHM will be equal to what beta? Amplitude. Maximum displacement of a particle in SHM is called what? Amplitude. It is a vector quantity. उसका फॉर्मूला क्या होगा? Y max is equals to your E. Y max is equals to your E. Clear है सभी को? चलो. Third point. Basic characteristics है बेटा, ये आपने को दिमाग में रखना है पर कभी भी. For given SHM, omega comma t are constants. ठीक है? So time period will be equal to t is equals to 2 pi by omega. ठीक है? तो given a situation, omega और t की वैल्यू क्या होती है अपने को? Constant. ठीक है? Now this fourth one is something very important. Keep a star mark for this one. Acceleration of जो SHM होता है, acceleration of SHM is always directed towards mean position. And
it is variable. It is variable with time or position. Okay. So A will be equal to minus of omega square into y. Done. We can write here omega is equal to how much beta? Under root of your A divided by y. Isn't it? In opposite direction. Minus sign indicates negative sign indicates opposite direction. ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है तो क्या निकाल सकता हूं मैं इसमें से? सो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. ये बन जाएगा मेरे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय y. यानी टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू योर 2 पाई under root of your y divided by a. So time period will be equal to t is equals to 2 pi under root of your y divided by a. Y मतलब displacement, a मतलब acceleration. So time period will be equal to t is equals to 2 pi under root of your y divided by your a. Then the acceleration of a SHM is always directed towards your mean position. And it is always variable with your time or position. यानी जैसे जैसे टाइम और पोजीशन चेंज होते रहेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन में चेंज होते रहेगा. तो ये का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई. उसमें से ओमेगा निकाला मैंने. ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर ए बाय वाई. टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा वैल्यू डाल दिया तो वी गेट इन टाइम पीरियड एज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ वाई बाय ए. क्लियर? सुन रहे बेटा आप लोग? कितने जन है क्लास में?
सुन रहे बेटा? ले रहे बेटा? Next one बेटा, very important concept of phase. Concept of phase. Phase क्या होता है बेटा? So write that. Phase is the angular displacement of particle in SHM which describes the position of particle with respect to mean position. ठीक है? So what is this one beta? So phase is the angular displacement. It is the angular displacement of a particle in the SHM which describes what? Position of the particle with respect to the mean position. यानी mean position से कितना एंगल लेके घूम रही है. जैसा मान के चलो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ. एक पार्टिकल है which is moving on SHM. तो ये हो गया इसका x एक्सिस और ये हो गया इसका y एक्सिस. ठीक है ना? अब ये जो पार्टिकल है ना यहाँ से स्टार्ट होके t is equals to 0 तो ये मीन पोजीशन हो गया. तो यहाँ से होके यहाँ तक कहीं गया समझो. तो ये हो गया t and this is making an angle of theta. Theta is equals to how much यहाँ पर ओमेगा into t. ठीक है ना? तो ये भी थीटा ही बनेगा. तो ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y. ये हो गया origin. So this angular displacement and it is moving with angular velocity omega. तो फेज कितना हो जाएगा बेटा इसके लिए? फेज ऑफ द पार्टिकल t is equals to 0 कितना हो जाएगा? फेज of a particle at t is equals to 0 is called initial phase. Or also called as epoch. Is represented by letter 5. ठीक है ना बेटा? इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल t is 0 के पास थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, isn't it? तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इनिशियल फेज बोलते हैं. इनिशियल फेज बोलते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एपोक, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर 5. तो फर्स्ट वाला देख लीजिए. अगर मैं इक्वेशन दे रहा हूं y is equals to a into sin omega into t. एंड इसका एपोक कितना हो गया बेटा? इनिशियल फेज कितना हो गया? इनिशियल फेज मतलब 5 की वैल्यू तो 0 है. और फेज कांस्टेंट कितना है इसका? फेज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी. इस ओमेगा टी को हम लोग फेज कांस्टेंट बोलते हैं. क्लियर है? y is equals to a into sin omega t में एपोक कितना है? यानी इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल फेज इज 0 और फेज कांस्टेंट कितना होता है बेटा? ओमेगा इनटू टी इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. क्लियर?
Any doubt anyone? चलो नेक्स्ट वन समझिए जरा. ठीक है, ये हो गया इसका एक्स एक्सिस और ये हो गया इसका वाई एक्सिस. अब पार्टिकल जो है ना, मान के चलो यहाँ पर कहीं पर है इनिशियली, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हो गया इसका ओरिजिन वाई. ठीक है, तो पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 के पास यहाँ पर है, दैट इज मेकिंग एन इनिशियल फेज ऑफ योर फाइव. तब ये यहाँ से होते हुए मान के चलते हुए विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यहाँ पर कहीं जाके रुक गया. तो t इज इक्वल्स टू t सेकेंड्स. ठीक है, तब इसकी एंगल जो होगी, व्हाट विल बी द एंगल बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये होगी इसकी एंगल, सो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. और ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कभी भी कहां से मेजर करना बोला था मैंने, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू योर वाई. ठीक है ना. नाउ इफ द पार्टिकल इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, द पार्टिकल इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट यानी t इज इक्वल 0 के पास जब ये पार्टिकल है, सो इसका इक्वेशन जो बनेगा, सेकंड वाला डायग्राम डालता हूं. So it is y is equals to your a into sine omega t minus of your phi. Phi जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए the particle starts moving towards the positive x-axis. If particle starts moving towards positive x-axis. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग फेज जो लेते हैं ना यहीं से लेते हैं, इतना ही लेते हैं. ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, ये वैल्यू विल बी इक्वल टू ओमेगा टी में से फाई को निकालो, सो दिस विल बी द फेज. तो इक्वेशन क्या बन गया, इफ द पार्टिकल इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो y इज इक्वल टू a इनटू sin ओमेगा टी माइनस ऑफ योर फाई. माइनस क्लियर है ना, व्हाई इट इज, बिकॉज़ इट इज इन द टर्म. तो इसका एपोक बताइए बेटा, कोई बता सकता है, व्हाट इज इट्स एपोक इन इनिशियल फेज. इनिशियल फेज इक्वल्स टू 5 एंड इट इज लैगिंग, और ये लैग कर रहा है क्योंकि नीचे है ना. और फेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा, व्हाट विल बी द फेज कांस्टेंट यानी फेज एंगल. फेज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ योर फाइव, इजंट. ये टोटल टर्म को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं. ये जो होता है ना इतना वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एंगल. ठीक है ना, ओनली फाइव को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज. ठीक है, तो इनिशियल फेज कितना आ गया, 5 आ गया, और ये लैग कर रहा है, और फेज कांस्टेंट कितना आ गया बेटा, ओमेगा टी माइनस ऑफ योर 5, दैट विल बी द फेज कांस्टेंट. क्लियर है. चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करो. अब बोलते हैं सर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं लेकिन ओरिजिन के पास नहीं हूं, तो जब कैसा लोगे आप. जैसे मान के चलो ये सर्कुलर पाथ है, और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस. ठीक है, अब बोलोगे सर मैं इनिशियली जो है ना t इज इक्वल्स टू 0 पे मीन के पास नहीं हूं, लेकिन दिस इज एट एन एंगल ऑफ 5. अब मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गया t सेकेंड्स, और मैं मूव कर रहा हूँ विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो ये बन गया मेरा राइट नाउ फॉर दिस गिवन कंडीशन ओमेगा इनटू योर टी पार्ट डिफ्लेक्शन. ठीक है ना, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, ओमेगा इनटू टी. तो फेज एंगल कहां से लोगे आप, इनिशियल से लोगे, तो ये पूरा फेज एंगल बनेगा. पूरा फेज एंगल कितना बनेगा,
ओमेगा टी प्लस ऑफ योर 5 बनेगा, क्योंकि हम लोग सभी चीज ऑरिजिन से ले रहे हैं अलॉन्ग योर एक्स एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू ये इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 बनेगा, isn't it? So provided if particle starts moving towards negative x axis, ठीक है ना, देखो यहां से होते हुए इट इज गोइंग टुवर्ड्स योर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका एपो कितना बनेगा बेटा, यानी इनिशियल फेज विल बी 5 एंड इट विल बी लीडिंग, ये देखो ऊपर है ना एक्स एक्सिस से, तो इट विल बी लीडिंग, एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा तो लैगिंग। और इसका फेज कांस्टेंट कितना होगा बेटा, फेज कांस्टेंट बोलो या फेज एंगल बोलो, फेज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ऑफ योर 5। So initial poke is right now for me leading and phase constant will be equal to omega t plus 5, और equation क्या था, y is equal to a into sin omega t plus 5, और equation अगर मैं ले रहा हूँ y is equal to a into sin omega t minus epoch is right now lagging और फेस कांस्टेंट जो होगा ओमेगा टी माइनस ऑफ 5, ये तीन इक्वेशंस अपने को याद रखना है। द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन y इज इक्वल टू a into sin omega t, अगर कोई पूछे व्हाट इज इनिशियल फेज मतलब 0 और इसका फेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा ओमेगा into t। Clear for everyone? So what is the phase beta? Phase is the angular displacement of the particle in a section which describes the position of the particle with respect to the mean position, ये वाला theta। So phase of the particle t is equal to 0 is called as what beta? Initial phase, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, epoch, represented by letter 5। That तो y is equal to a sin omega t के लिए phase constant क्या होगा, a sin omega t minus 5 के लिए क्या होगा, y is equal to a into sin omega t plus 5 के लिए क्या होगा। These are very important things you need to remember with। I hope got it everyone. Done? Sure. This one, stomach डाल के आप लोग बोलना अभी। If a particle starts oscillating from mean position, oscillating from mean position, comma, its displacement is given by y is equals to a into sin omega into t, is का equation। The particle is starting from the mean position, y is equals to a into sin of omega t। अब देखो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला, नंबर 1, t is equals to 0 अगर ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, y is equals 0 हो जाएगा, तो ये हो गया मीन पोजीशन। isn't it? The same way at t is equals to total time अगर कैपिटल t है, अगर मैं t by 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, t is equals to t by 4 मतलब y is equals to a into sin omega is 2 pi by capital T into t is right now t by 4, at और t चले गया, this is 2 ones are, this is 2 twos are, pi by 2, now sin 90 will be equal to how much better 1, यानी y will be equal to your a, this will be equal to maximum, ठीक है, t by 4 के पास y will be the maximum, isn't it? उसी तरह से नेक्स्ट वन वेलोसिटी के लिए लिखूं मैं, अगर v is equals to what is the formula, v is equals to your a into your omega into cos of your omega t, isn't it? तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम, सेम सिचुएशन, t is equals to 0, t is equals to 0 के पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, कोई बताएगा, t is equals to 0 मतलब cos 0 is nothing but 1, यानी v value will become maxima, v max is equals to a omega आ जाएगा, ठीक है ना। at t is equals to नेक्स्ट वाला लिख लीजिए, at t is equals to t by 4 अगर लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, तो v वैल्यू विल बी इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल t इंटू, और t की वैल्यू हो गई t by 4, 80 गेट्स कैंसिल, t 1s are 2 2s are 1s are 2 2s, and pi by 2 cos 90 will be equal to how much, 0, so v will be equal to 0, so v will be 0 at what position beta, at extreme position,
So this is your at extreme position. At extreme position velocity कितनी हो जाएगी 0 and this will be at your mean position. Mean position के पास velocity कितनी हो जाएगी maximum. T is equal to 0 मतलब mean position, T is equal to pi by T by 4 मतलब extreme position. ठीक है ना? तो नेक्स्ट वन देखो उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होगा कहानी बताइए. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a is equal to minus of omega square into a into sin of your omega into t. A is equals to minus omega square a into your sin omega t. So t is equals to 0. T is equals to 0. एक्सेलरेशन कितना बनेगा बेटा 0 बनेगा. T is equals to t by 4. Acceleration कितना बनेगा बेटा. Acceleration will become for me maxima. This will be equal to minus of omega square into a. यानी extreme position के पास acceleration maxima और mean position के पास acceleration will be minima. Clear है. A is equals to minus of omega square into your omega t. तो t is equals to 0 के पास acceleration 0 होगी, that is mean position. T is equals to t by 4, that means at extreme position acceleration will be maximum. क्लियर है. उसी तरह से अगर वेलोसिटी की कहानी देखा जाए v is equals to a omega into cos of your omega into t. तो v max बनेगा a omega और v minima will become 0. It will be 0 at extreme position and it will be maximum at your mean position. उसी तरह से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ y is equals to a into sin of your omega t. T is equals 0 यानी y is equals 0. मीन पोजीशन के पास डिस्प्लेसमेंट कितना 0. T is equals to t by 4 यानी y की वैल्यू कितनी बन गई मैक्सिमम एट योर एक्सट्रीम पोजीशन. So this is your at extreme position. ठीक है ना. चलो यहाँ तक रख लीजिए. We'll try to do the numericals in the tomorrow session of your class. ठीक है. और जरा मॉर्निंग जल्दी आ जाइए करिए बेटा. आप लोग के लिए ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ रहा है बेसिकली. 6 o'clock शार्पली आ जाइए और हुआ तो 5 मिनट पहले आसिफ सर को बोल दे कि आप लोग आके ज्वाइन कर लीजिए बेटा. ठीक है. चलो टेक केयर बेटा. बाय.